Students, very good morning. This is our final lesson of the lesson Rattrap. It's written by Selma Lagerlof. In the previous lecture, we discussed that Rattrap seller was taken as a guest on the eve of Christmas Day. The father and daughter went for Christmas service early in the morning. When they returned about 10 o'clock, uh, the daughter she was looking very embarrassed and worried. Uh, she was looking very dejected than usual. It was unlikely as her habits were. And at the church, she had learned that the right trip seller was actually a thief, he was a rogue, he was a robber. जो राइट ट्रैप सेलर था उसको उन्होंने जो प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस कर दिया, उन्होंने यानी बाप बेटी ने एयर मास्टर और उसकी बेटी ने बहसती मेहमान रखा था। और जब वो सुबह सवेरे क्रिसमस के लिए चले गए थे चर्च में, तो वहाँ आते आते जो राइट ट्रैप सेलर की जो एरन मॉस्टर की डॉटर जो थी, वेलमैनसन जो थी, वो कुछ उदास सी बुझी सी लग रही थी। उसने वहाँ उसे ये खबर मिली थी कि जो राइट सेलर था वो एक्चुअली एक चोर है, एक रॉबर है, ऐसा उसने सुना था। अब उसके बाद क्या होता है ये हम इस वक्त पढ़ लेते हैं। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said the father. But father gives an ironical statement. In fact, he castigates her daughter. He tells her that it was not good on part of her that he let a fellow into the house who was not a good fellow, who was not a nice person, who was a rogue or who was a robber. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. And father tells him that he wonder that all the silver spoons would have been taken away by the Rattrap seller. And जो बाप था वो अपनी बेटी से तंजिया अंदाज में कह रहा है कि आपने जो इस शख्स को घर में रखा वो तो अच्छा शख्स, वो बहुत ही अच्छा शख्स है। दरअसल उसके कहने का मतलब ये था कि वो अच्छा शख्स नहीं था, वो एक चोर था। अब मुझे ये फ़िक्र है कि हमने जो वो चांदी के वहाँ स्पून्स हैं, उनमें से उसने कुछ रखा भी था है घर में या नहीं रखा होगा, ये उसकी फ़िक्र लाहक थी उस वक्त। द वैगन हैड hotly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. And when their vehicle stopped in front of the gate, in front of the steps, the ironmaster asked his servant, the valet, उसने अपने नौकर से ये कहा था कि फर्स्ट यू इंश्योर इफ द राइट ट्रैप सेलर वाज इन और ही हैज़ लेफ्ट। उसने कहा कि पहले इस बात को यकीनी बना लो कि देख लो कि वो राइट ट्रैप सेलर जो है वो अभी घर के अंदर ही मौजूद है या वो वहाँ से निकल चुका है। He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with at all. The headmaster added that at the church he had heard the news about the right trap seller that he was a thief.
he was not a normal man. But to his satisfaction, the answer was that the Rattrap seller has left, but he has not taken away anything. Means no theft has been taken place at the house of the headmaster. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wellman's son was to be kind enough to accept as a Christmas present. On the contrary, इसने क्या किया था कि उसने कोई चीज़ लेने के बजाय उसने क्या किया था कि उसने एक पैकेट वहाँ छोड़ा था मिस वेलमैनसन के लिए, बिकॉज शी हैड केयर्ड फॉर हिम द मोस्ट. शी हैज़ केयर्ड हिम एज a captain, as a respected guest. उसने एक बड़े बाइज़्ज़त मेहमान की तरह उसकी खातिरदारी की थी, उसको इज़्ज़त दी थी. तो इसी वजह से उसने मिस वेलमैनसन के लिए एक गिफ्ट रखा था, एक पैकेज वहाँ रखा था. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into the view at once. When the Wilmanson took the package, and it was badly done. It was not done so that the contents of it would have been covered properly. That was not done, but the contents were visible easily. So it was badly done. यानी उसको इस तरीके से नाकारा तरीके से इसको पैक किया गया था कि उसमें जो चीज़ें थी वो दूर से दिखाई दे रही थी कि इसमें क्या है. शी gave a little cry of joy when she found the contents. She felt extremely happy and she uttered a cry. वो बहुत ही खुश हुई और उसने एक खुशी की एक चीख ने निकाली, यानी उसने चिल्लाया खुशी से. She found a small rat trap and it lay there 3 wrinkled 10 kroner notes. उसका गिफ्ट क्या था? गिफ्ट उसका ये था कि उसके लिए एक छोटा सा रैट ट्रैप रखा था और उसमें 3 wrinkled 10 kroner नोट्स रखे थे. आपको याद होगा कि ये क्रोनर नोट्स उसने उस आदमी से, उस ओल्ड मैन से चुराए थे जो सड़क के किनारे जिसका मकान था, जिसकी रहाइश थी. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large and jagged characters, and उसने वहाँ पर इतना ही नहीं किया था, but he has also written something for the Wilmanson, and it was not also written properly. It was written in jagged characters. And honored and noble miss, उसने वहाँ ये लिखा था, honored and noble miss, since you have been so nice to me all day along. उसने उसे कहा था कि आपने बहुत मेहरबानी से आप मेरे साथ पेश आई. एज इफ़ आई वॉज कैप्टन, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मैं एक रिटायर्ड कैप्टन था. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और मैं भी आपके साथ यही सलूक करना चाहता हूँ, इसी तरह से पेश आना चाहता हूँ. इन रिटर्न एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि एक यानी हकीकी कैप्टन एक अपने मेज़बान के साथ, अपने यानी मोहसिन के साथ पेश आता है. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, and you should know it, that you should not get any harm by a thief on this very Christmas day. But you can give back the money to the old man on the roadside. But you have to do one thing good for me, that is that the money which has been taken from the man from roadside, you have to return the money. Who was a money
who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers, and the money was in the pouch, and it was always hanging just like the bait for the poor wanderers. वो इन लोगों के लिए एक अट्रैक्शन थी, एक कांटा जैसा जैसा था जिसमें वो फंस जाते थे, एक जाला जैसा था जिसमें वो फंस जाते थे, जो बेचारे वहाँ मुसाफिर आया जाया करते थे. The rat trap is a Christmas present from the rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to the captain. And you should know that this gift is from a man, from a rat. It means that the rat trap seller calls himself a rat. Just like the rat is trapped in a rat trap, same is the case with the rat trap seller who is entrapped in the trap of the world, rat trap of the world. He is also caught like this. यानी दुनिया के इस रैट ट्रैप में वो खुद एक रैट की तरह फंस चुका है. If he had not been raised captain, but only one thing uh, redeemed him from this rat trap, being caught in the rat trap. एक चीज ने उसको नजात दिला दी, because he was raised to the position of captain by the words of the well-mentioned and his father. इसी वजह से उसको नजात मिली, क्योंकि उसको एक राइट ट्रैप सेलर के बजाय एक कैप्टन की हैसियत से उसे पहचान लिया गया. उसी पहचान ने उसको इस दुनिया के रेड ट्रैप से आज़ादी दिला दी. बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ. इस तरह से उसने अपने एक हिम्मत जिताई, उसमें एक ताकत मिल गई कि उसने आपको इस दुनिया की दलदल से, इस लालच की दलदल से उसने आपको अपने आप को नजात दिला दी, अपने आप को साफ सुथरा किया. थैंक यू वेरी मच. दिस इज़ एनफ फॉर टुडे.